there's a lot of less people comfortable being themselves. मैं ट्रैक जब बनाता हूँ तो आई लुक एट इट कि इस टॉपिक में किस तरह का ट्रैक होना चाहिए. इफ आई आई ट्राई, बट बस ये है कि बस बाहर काली वीक होना खड़ी हो, बाकी खैर है. हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। देसी बैठक में एक बार फिर से खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट लोधी। और आज की बैठक में जो हमारे मेहमान हैं, अगर ये कहा जाए कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एंड वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल आर्टिस्ट इन द होल देसी हिप हॉप, तो आई डोंट थिंक किसी को कोई रिजर्वेशन होगी। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स वेलकम मौजी सरकार। Hey, how's it Hey my going? brother, how you doing bro? I'm good, alhamdulillah. What about you? Yeah, man, very nice, bro, and really excited to have you. Uh, a big fan, man. I've been following you from Bro, humble. 4 5 years easily, and since I've had, it was always like one. I can easily say one of the most entertaining artists in Pakistani hip hop, at least, like easily. If I ever rank top five most entertaining hip hop artists, even like music artists, bro. I sometimes I don't even really like put you in that hip hop box because as a music fan, I feel like it's bigger than that with you. Um, It's like, I mean, क्या बोलते हैं? I'm honored, bro. You see it that way. I just enjoy making music and all, and I really appreciate that you find it. It connects to you. It's really great. It's really great. Yeah, I think So the very like I think the realest word you just used is connects with you, I think. And yeah. I think that's a key for your music. Like every time, is that an intentional thing? Before, like I'm not even gonna go to typical questions and all that, bro. Let's Uh, start with this. Is that uh, an intentional thing? Yeah, intentional. Like, is that something that you try to do, put intentionally, like an entertainment value, or is it just how it comes to you? Brother, if we try to intentionally put something like this in the song, so it shows because it seems forced. Hmm? I just try to be myself. I just try to, try to make stuff that I would find cool. That try to make the stuff and say the stuff that I would find funny or cool or quirky or pretty nice or fire, Yeah. as you would say. And that's how it goes. It connects with people. If I stay, real with myself and say the things that I really feel, Hmm. I'm sure there are people who share the same views as I do. So I guess that's how it connects. If I try to say something that I'm not, though, I guess it would really sound corny and forced. So I don't want to do that. That's But yeah, there's a lot of things that you say, but if I would say those things, maybe मेरे पास वो conviction नहीं है शायद, or maybe yeah. that's not my life, or maybe like saying something funny and saying it with the timing and a cadence, which Uh, basically hits. I think there's a lot of like there's a huge difference between the two. yes, brother. Brother, ये सीन है कि बहुत सी चीजें आप भी ऐसी बोलते हो जो मैं नहीं बोल सकता. For example, if I started, let's take Expeller Mardar या Sunny Khan, for example. Mhm. If I rap like Sunny and rap about the topics he raps about, they would know that ये Osama नहीं है, ये Moji नहीं है, he's not. बिल्कुल ठीक। This doesn't connect नहीं होगा. तो I think जितना हम लोग अपने आप से true होते हैं उतना ज़्यादा I guess connect होता है. So बिल्कुल ठीक है। that's the thing. अच्छा ब्रो, चलो लेट्स गो बैक टू द बेसिक्स, ठीक है ना? सो Mm-hmm. Moji was Youngbone. Mm-hmm. Is Youngbone a younger version of Moji, Mm-hmm. or Youngbone is a different character than Moji? And Uh-huh. these are two different characters which you created. इन दोनों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है. उसामा इज अ थर्ड पर्सन. यंग बोन, मौजी, आई एम, दिस इज, लिसन ब्रो, मैं जब म्यूजिक सुनता हूँ और जब मैं इस तरह की कोई एक्टिविटी देखता हूँ अपने सामने, आई ट्राई टू ब्रेक इट डाउन, ठीक है ना? तो Same, आई same. आई ऑलवेज फेल्ट लाइक हमारे सीन को कैरेक्टर्स की बड़ी ज़रूरत है, बिकॉज दे Uh-huh. सोलिडिफाई सर्टन. होता है ना, वो लोग कहते हैं यार ये एंटिक्स हैं या गिमिक्स हैं, बट Uh-huh. लाइक सर्टन कैरेक्टर्स होते हैं जो सर्टन चीजें पुल पुल ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना? उसके लिए वो Uh-huh. कैरेक्टर होना जरूरी है, ठीक है, बेसिकली. Yeah. सो दिस इज सो इस सारे तमहीद बांधने का मकसद यह सवाल यह इज
like Usama, Moji, and Young Bon are three different characters, or is it basically like evolution of the same person? Well, Sama is a very, whenever you hear Sama on a track, and I know, I'll be honest with you guys, you have not heard much of Osama like on tracks right now. Mm-hmm. But Osama is the most honest form of my poetry, if you hear it. ठीक. Uh, if you would say, yeah, Moji is the most commercial form of my poetry or my art. Mm-hmm. Youngbone is the most I don't give a fuck kind of poetry Mm-hmm. that I show. बिल्कुल ठीक. So basically कैसे create हुआ? I didn't even create this. I didn't even intend to create it. Basically, I was 14 or 15 when I was really small, and उस वक्त जब मैं हिप हॉप सीखता था तो उस वक्त ये नाम आया था. उस वक्त यंग जीजी, यंग बूजी, इस तरह से यंग इतने सारे थे. Hmm. So like my friends were like, you should call yourself Young Bone. तुम बड़े पतले से हो जबरदस्त से. I'm like, हाँ. वो कहते सूखी हड्डी और इस तरह जिस तरह बचपन में Yeah, कहते हैं ना, तो उन्होंने उसको yeah, ट्रांसलेट करके आओ. अब ये अगला exactly. क्वेश्चन था मेरा कि इसका ये आया हाँ, कहाँ से? वाह. यहाँ से आया. तो स्कूल टाइम से आया. हम्म. हम लोग का लाइक छोटा सा एक स्कूल का ग्रुप था जिसमें हम लोग सारे बॉयज होते हैं वो रैप वगैरह में घुसे हुए थे. एंड एक सही उसमें से मेरा ब्रो था जिसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था सारे सीन से. सही सही तो सही. हम लोग ये रैप नर्ड्स थे. तो वी गेव ईच अदर नेम्स लाइक एक कोई उसमें पता नहीं स्विच नाम था एक बंदे का. मेरा बोन था, यंग बोन. एक रोमियो करके पता नहीं क्या, लाइक ये क्रिंजी एस नेम्स. Yeah, सो yeah. I feel you, bro. या, I ये feel मेरे you. पास I बहुत was like Desi voice when I started. So yeah, it's good. देसी वॉइस. Yeah, I लेकिन did. I didn't want to tell the name. चलो अब तो हो गया. अच्छा, ये हाँ, बड़ी एक्साइटिंग चीज़ है ब्रो. मैं हमेशा से ये चीज़ फील करता हूँ कि लाइक जाहिर है, जो जहाँ बड़ा होता है, जिस शहर में आप बड़े होते हो, ऑब्वियसली वो आपको ऑब्वियसली हर तरह से मोल्ड करता है, सिटी की या इन्फ्लुएंसेस. ब्रो. कितना कराची का इन्फ्लुएंस है? ऑब्वियसली होगा बहुत, बट आई एम ट्राइंग टू से इज लाइक शहर ने कितना आपको, आपकी आर्टिस्टिक वैल्यू ऐड किया आपके आर्ट में एज अ कराची, यू नो, बिंग a metropolitan of one of the biggest city in Pakistan. Brother, ये बहुत अच्छा question है. This is like one of the best questions I've ever had. I mean, cities are so important for sound in hip hop. They don't realize कि Brooklyn का sound कैसा है. They There you don't go. realize कि क्या नाम है, New Orleans का sound क्या है, और Atlanta का क्या sound चल रहा है. हाँ, So जब yeah, न्यूयॉर्क से आते हैं लॉक्स, और जब एक लाइक एक बूम बैप लाइक गैंगस्टर रैप साउंड, फिर आप जाते हो वेस्ट कोस्ट तो फंक हो जाता है थोड़ा, तो लाइक yeah. no. So Here's a yeah, where's the really Karachi sound? Like where is Moji yeah. got this Karachi sound? थोड़ा सा okay. I'll just elaborate about my childhood again. जहाँ से सारा stem हुआ था ना Mm-hmm. सारा scene. I was basically born and raised in Dubai. So yeah. I Sure. was born in Abu Dhabi. I was born and raised over there. So ठीक. वहाँ पर ये culture was really like really flourishing. You Mm-hmm. see like graffiti everywhere. There was no area in Dubai जहाँ पर दीवार में एक टुपाक का नाम graffiti से नहीं लिखा हुआ था. It Mm-hmm. was like that, and I just got into the music scene, like got interested in the music, the hip hop music. Sick. जब ये Smack That in the club और ये सारे रेडियो पे फट रहे थे. Mm-hmm. सही है. तो वहां से मेरा 2004, एक जो 5, 2004, 5 around that time. 2004-5 bro, and it's like very early, and it's खैर मेरे लिए early because Yeah, yeah, of course. I was not that young that time. I was young born. I was very young. You still were So young born at that time, so yeah, that's I you was still still young. like, identified as you. Good. Yeah. So वहाँ से मेरा एक influence, and वहाँ से मेरी technicalities and the roots and everything was there. सही है ना? I didn't have the Dubai flavor in me. Mm-hmm. सही है? I was just a learner of the craft. मैं सीखता था multi-syllable rhymes क्या है, wordplay क्या है, तो ये similes क्या होते हैं, अच्छा तो ये क्या है Mm-hmm. उसने किया, इसने वैसे कैसे किया, writing styles क्या होते हैं, Mm. storytelling. I was Mm. just too much of a nerd. I used to battle online with people. I didn't know shit. ठीक है ना? I used to battle online. बहुत ज़्यादा वो नहीं करते थे कि like used to think about like I'm gonna turn into an overnight fucking star when I do these battles and shit. Nah. I feel you, bro. So वहाँ से मेरा एक like I got the technicalities down from there, the flows and everything. But when I came over here, I spent a great deal of time outside in the streets with my friends over here that I made.
and जो असल like the stories that I got and the more real experiences and जो होती है ना चोटें जो लगी है ना मुझे कराची की रातें, वो yeah bro, कराची है yeah, exactly. yeah, yeah, So the pain and the blood that I got is from here. yep. So and it was always there because it's in our blood. तो मेरे ख्याल से जो आया है सही वाला फ्लेवर जो आया है वो कराची का, वो मेरा यहीं से ज़्यादा इन्फ्लुएंस आया है एंड उससे कि कराची की रातें हो गया, उससे पहले भी मेरे लाइक यंग बोर्न एरा के जो गाने भी होते हैं Hmm. उसमें भी इट्स लाइक मी ट्राइंग टू बी यू नो फनी विद माय फॉर माय फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग Mm-hmm. and the things they find funny and the lingo I use over there is Yep. what we use in the street. तो कराची से असल इन्फ्लुएंस है मेरा कैरेक्टर एंड एवरीथिंग जो है ना वो वहाँ से बेस होना शुरू है, दैट्स व्हाट आई थिंक. बाकी you know it's open to your No, I interpretation think of I what you think say. I think you put it really well, bro. Because like एक साउंड है, ऑब्वियसली एक डार्क साउंड होता है हर जगह का, जाहिर है डार्क Mm. इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं और फिर आपके वो पॉजिटिव और एक फन इन्फ्लुएंसेस भी होते हैं जहाँ आप बड़े होते हो. एंड आई थिंक यू Mm. आर द फन साइड ऑफ कराची हिप हॉप. ठीक है ना, लाइक सी आई एम द गाय, आई मैं इस तरह की टर्मिनोलॉजीज यूज करता हूँ क्योंकि इट मेक्स इट इजी टू काइंड ऑफ पुट इट यू नो इन द पर्सपेक्टिव, लाइक Yeah. क्योंकि अब लोग सोचेंगे कि ओ यार और भी बड़े रैपर्स हैं, बट लाइक इट्स माय ओपिनियन, यू गेट मी. सो व्हेन आई वांट टू Yeah. हैव फन इन उर्दू, अच्छा अभी हम अगले शकील बातों पे भी जाते हैं. तो सही. बात यह है, आई हैव बीन राइटिंग उर्दू पोएट्री सिंस आई वाज 13-14 years of age, ठीक है ना. सही है. एंड आई एम अ 31 years old guy, ठीक है. ओहो तो माशाल्लाह. आई हैव बीन राइटिंग लाइक बहुत सारे रैपर्स की उम्र जितना मैं लिख रहा हूँ, ठीक है ना. अब Alright, पॉइंट bro. ये है, आई वॉज ये बात मैं अब पहली दफा किसी को भी बता रहा हूँ और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इट रिलेट्स टू यू. हाँ. पहली दफा मैंने जब उर्दू में रैप करने का सोचा था ना, वो आपके गाना सुनने के बाद सोचा था. Ah, bro, this is like huge. Thanks, bro. That's a fact. And I Oh think my God. I think someone can verify it as well. Probably Dar or Hashim Nawaz can. But I think Ah, there was a time where मैं सराइकी हूँ, like I'm from सराइकी background, so like right. मैं सराइकी में रैप नहीं करना चाहता था क्योंकि बड़ी सॉफ्ट लैंग्वेज है. आई डिडंट ब्रेक द कोड. मैं हमेशा से कहता Say, हूँ आई डिडंट ब्रेक द कोड फॉर सराइकी रैप. say. दैट्स व्हाई आई नेवर ट्राइड इट. बट उर्दू जाहिर अपनी जबान है, but Mhm. rapping in Urdu was like a tricky thing for me क्योंकि I had to unlearn a lot of things before I started rapping in Urdu. मुझे असलूब Yeah, भूलने पड़े थोड़े से, गजल और नज़म के अपने आप को थोड़ा yeah, फ्री bro. फ्लो में लाना पड़ा. And I think when I was trying to come up for with that bit of my sound, your songs really helped me, bro. And Wow, bro. this is just a fact, and I don't care whoever thinks whatever, you know. That's just what this, I'm just gonna put it out there. Um, Thanks, bro. तो ये एक चीज है ब्रो. अब Yeah. मैं ये कहना ना, मैन दैट्स अ फैक्ट, लाइक आई सेड. अब आप उसके फांसी के तख्ते पे भी चढ़ गए, यही कहेंगे. तो बात ये है कि दैट्स समथिंग यू डिड फॉर मी, बट आई थिंक वो यू डिड फॉर अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट जो अब आ रहे हैं, वो ये है कि हम जैसे जो लोग या जो हमसे पहले भी जो रैप कर रहे थे लाइक बोहेमिया भी, हम लोग बहुत ही Mhm. सीरियस देसी हिप हॉप कर रहे थे, वेयर लाइक हम लोग ये नहीं सोच रहे थे कि ओ यार ये एक एंटरटेनमेंट की चीज है. इट्स बेसिकली द पर्पस ऑफ Basically, इट इज yeah. टू एंटरटेन. तो हम Mhm. बहुत ही सीरियसली ले रहे थे. बट आई थिंक वंस यू केम इन द सीन, लाइक वी काइंड ऑफ लाइक व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड यू, काइंड ऑफ एक बत्ती नहीं चलती वो कि मैंने कहा Ah, यार अच्छा ये भी सीन है. वी डोंट yeah, necessarily have bro. to be rebellious about it all the time, and like you Yeah. don't have to, you know. So I think ये आपने जो आगे रैपर्स आ रहे हैं, you broke that code for them, so that is something we should give you flowers for that. And that's what we're here for, bro. क्या Bro, बात. I'd like to add something about this. It's a really interesting thing that you said कि लोग जो है बहुत aggressive हो रहे हैं and they can, you know, there are waves. If you'd see the history of Desi hip hop, there was a huge wave, huge Bohemia wave that I would say. जब Bohemia was like popping up and Ek Tera Pyar was like blasting everywhere. Yeah. उस वक्त ये हो रहा था कि every rapper that you'd hear had a Bohemia influence in them. Like most of them. Oh, definitely. And, here, here. That cadence in the voice, everybody was That like cadence. that Yeah, type of yeah. And that like I know बहुत बुरी बात लोगों को लगेगी, बहुत जो है ना वो गुनाह लगेगा, लेकिन मैंने इसी वजह से बोहेमिया को ना बहुत अवॉइड करता था सुनने से, because I felt like if I listen to him he's gonna influence me.
No, I mean, I that's don't. a great point. No, why Uh, किसी को क्यों बुरा लगेगा, bro? Because uh, we can see that, like, uh, what you developed out of it, उसका output क्या uh, निकला, we can see yeah. that. That's the thing. It's not like I don't like him. मुझे बहुत पसंद है उसके गाने. I mean, उसकी जो वो एल्बम है जिसमें काली नजराली 420 और वो दिल है का पहला था. Yep. It's like one of my favorite. I don't remember the album's name. I think 420 ही था नाम. I think चालू वो है ना, एतबार और दीवाना और वो वाली ना, जिस Yeah, वाला bro. दिल में. That's like fucking classic. Even hip hop में देखा जाए तो like Yeah, all over hip hop में. yeah, yeah. So, Definitely is. I want but that still, Bohemia back. Every time I listen to new Bohemia, I'm like, yeah, bro, give bro. me another Divana type track. Like, Yeah, bro. yeah, I need something like that, my divan. That's like fucking classic. But yeah, thing is, absolutely. a waves I think. Hmm. Then there came a wave like अब जैसे wave चल रही है, like everybody's trying to kind of sort of sound like young stunners because they're Mm-hmm. popping up right now. Mm-hmm. So scene ये कि there's a lot of less people comfortable being themselves. Yeah. There's Wow. a lot of less people. अब मेरे सामने कोई आता है, I produce for people, Of course. and upcoming artists come around to record and all. I hear them and I'm like, bro, what are you talking about? This is not you at all. ये तुम नहीं हो, तुम क्या कर रहे हो, ये तुम ब्रो 15-14 साल का बच्चा मेरे सामने खड़ा हुआ बोलता है मैं तुझे मार दूंगा, गाड़ दूंगा, फाड़ दूंगा, गोली. Bro, I don't respect that. That's not gonna go anywhere. Yeah. uh You don't उसको live that. What are you yeah. talking about? Yeah. Yeah, I would really appreciate it. मैं चाहता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि कोई 14-15 साल का रैपर आए या 13 साल का रैपर आए and he just raps about a school bunk. He raps about कि यार Oh, मैंने क्यों नहीं, है ना? I mean, he bro, raps. you're the man. मैं यही तो बात कह रहा हूँ. मैंने जब जुम्मा बनाया था ना, like when I was हाँ making जुम्मा, I was thinking like, यार मैं इस एज में हूँ कि हाँ मैं ये बात कर सकता हूँ लोगों से. सो आई कैन लिंक हाँ. दैट विद यू, क्योंकि मैं उस उम्र से गुजर चुका हूँ, आरडीबी के दौर के सेट्स और उस तरह की बातें. Yeah, bro. एंड ब्रो आई थिंक यू नब्ज पकड़ लिया बात की. यूर दैट्स अ ब्यूटीफुल थॉट. Yeah, bro. अब देखो कोई आता है बंदा, कोई बच्चा आके अपने, अब सोचो एक बच्चे ने निकाला अपनी इस्लामियात की टीचर पर डिस सॉन्ग निकाल दिया. ब्रो कितनी हिट चीज होगी वो कि यार ओहो, बच्चे ने डिस सॉन्ग निकाला अपनी इस्लामियात की और टीचर उसके पे, अंदर ओ देखो. फैक्चुअल बातें करे जो इस्लामियात में या गलत ब्रो. पढ़ाई जाती हैं, लाइक प्रॉपर. ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे हो. ये थोड़ा सा, लेकिन ये ब्रो, आई मैं मीन कह रहा हूँ दैट्स दोनों आपकी और मेरी दोनों वाला खाता पूरा हो ना यहाँ पे पंच लाइंस में. yeah bro. और लेकिन ये कि people just don't want to be themselves. Basic बात ये है. ब्रो And that's kind of sad. ब्रो ये मुझे बताओ, एक चीज मैंने देखी है, द क्रिएट लाइक आइडियाज. ऑब्वियसली Mm. लाइक इट्स ऑल अबाउट आइडियाज, इजंट इट? कि Yeah. आप लाइक आप भी राइटर हो, मैं भी राइटर हूँ. अगर एक अच्छा आइडिया है आपके पास, उसके ऊपर आप 16 बार, 36 बार, 60 बार लिखना मसला नहीं है. आई थिंक हाँ. द पॉइंट इज आइडिया, एंड आई थिंक Idea. you get some of the best ideas. Like Easy Money, bloody hell man. Like क्या Yeah. हम सबको पता है यार, ईदी मनी बचपन से ईदी ले रहे हैं यार. What is going on? You really came Yeah up with a bro. song about ईदी money, bro, and not just a song, another song about it, and they both are bloody fire. So मैं ये कह रहा हूँ, Bro. bro, it's one of my most favorite songs. Bloody, Bro. like it's one Respect. of it's there. मेरी बीवी गोरी है. She knows some of the Damn. lyrics of that song, bro. Damn bro. I've played it so much. Um, Bro. it's crazy, bro. Like ये चीज एक और मैं कह रहा हूँ, ideas, bro. ये पटारी कहाँ रखी हुई है, man? Bro. Bro. ये सीन बचा. Interesting story. मैं, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, मैं और मेरे दोस्त हम लोग ये करते हैं कि जब ईद आती है we get haircuts like early on. लोग क्या करते हैं कि ना वो चांद रात के दिन हेयर कट्स करवाते हैं. They just get stuck in the barber shop like fucking hell. हम लोग ये गेम करते हैं कि हम लोग even with Valentine's Day अगर मुझे डेट पे जाना होगा I'll go day after or 2 days before. That's how you play. ठीक Yeah, है. yeah. So Smart game. yeah bro, मुझे रश नहीं पसंद, वो मुझे वेट करना नहीं पसंद basically. Same scene. तो अब मैं बैठा हूँ बार्बर शॉप में and I was thinking about कि मैं ईदी कहाँ स्पेंड करूँगा. मेरे दिमाग में like वो मूवी बनी ना कि यार ओहो पैसा रेन हो रहा है and everything. Holy shit, this should be a track. Oh Bro. man, you're the Bro, man, bro.
घर गया हूँ, मैंने उसी दिन ट्रैक बनाया है, मैंने उसी दिन अपने दोस्तों को जमा किया है, अगले दिन मैंने शूट किया है, एंड थर्ड डे द शिट वाज आउट. It's a bloody classic. Wow. Yeah, bro. Wow. Bro, मैं यही बात कह रहा हूँ. I think, bro, you're blessed with ideas. I think स्वाद बहुत सारी वो ब्रो बहुत सारी चीजें हैं. लाइक मैं आपके साथ ना घंटों बात कर सकता हूँ. फिर एक और चीज है Bro, इसके by all ऊपर. means. इसमें एक और चीज भी है. When you go to that serious pocket of like storytelling and when you are telling Yeah, your story, yeah, bro, you like that's what I'm saying. Like you derive that energy from somewhere as well. It's not वही इसलिए मैं पहले बात पूछा था. इधर टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल लाइक क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो. मैं आपको बताता हूँ क्यों ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ. समवेयर इट कन्वर्जेस बिकॉज mm, serious sound बिल्कुल ही different and it has a pain in it and it everything isn't it, and all of a sudden yeah. you go into a fun track of yours and it's like I think it's a different artist. ये बंदा different है. Like इसकी life different होगी. Yeah, bro. Bro, they go. Life is basically, you're not laughing all the time, right? You know, they go एक time Sure. आता है with your friends and we're laughing around and we're flexing and everything. And then a point out there when you're not really happy and you're Mm-hmm. just, sulking about and you're just thinking about the shit that's going on. And I have like listened to so much music and I have been exposed to. I'm a heavy media consumer, ठीक है ना? Mm-hmm. So I've been exposed to so much of this stuff that I get ideas and everything, and I experiment as well. मैं ट्रैक जब बनाता हूँ तो I look at it कि इस टॉपिक में किस तरह का ट्रैक होना चाहिए. If I'm making a track about murder, let's say, Mm-hmm. so I would think about I don't know, a movie called what was the movie name? यार कौन सी movie थी? American Psycho. American Psycho ले लूँगा. I would think about the colors and then I The would think Christian about the Bale and soundtrack. yeah. Yeah, bro. I would make a song about वो Bateman जो था, and then उसके ऊपर वो एक क्या नाम है उसका music दूंगा. So it's like life has different colors. So Wow. life has different colors, and the colors that the different songs that you hear is like different colors from a It's life that I reflection of your experienced. life basically is what you're saying. Yeah. Yeah, bro. Beauty. Yeah. ब्रो यही एक और चीज भी इसमें यहाँ पड़ी कि व्हेन अच्छा आप हमेशा से प्रोड्यूस कर रहे हो लाइक सिंस यू स्टार्टेड म्यूजिक यू वर प्रोड्यूसिंग और यू स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग लाइक आफ्टर अ व्हाइल कुछ टाइम के बाद स्टार्ट किया. कब से प्रोडक्शन कब से स्टार्ट की? Bro, I've been producing since I decided I wanted to rap because I didn't know shit and I needed to do my own stuff. Like मुझे सीखना था किस तरह रिकॉर्ड करते हैं, क्या बीट बनाते हैं. I didn't know there were instrumentals on YouTube. So yeah, I was like खुद ही बनाना है सब कुछ ना from scratch. बाद में मुझे चीजें पता चली हैं and like there was a time in my family we didn't have access to internet. So I used to go in net cafes and shit and used to learn from there. जो भी समझ आता था. And then used to get beats and everything. बहुत पुराना टाइम था. It's like उस वक्त ये जो डायल अप खत्म हुआ था इंटरनेट का. सही उसके बाद हाँ कि वो कौन सा नेट डीएसएल पता नहीं क्या करके नेट होता था यार. वो पहले तो वो डायल अप के वहां पे डीएसएल आई थिंक डीएसएल शुरू हो गया था. हाँ डीएसएल was the one that was like oh so fast so पता नहीं कुछ केबीपीएस स्पीड थी उसकी भी. oh my god वो तस्वीर लोड हो गई है यार 5 मिनट में. oh my god इस दफा 10 मिनट नहीं लगे. वो यार मैं उस जमाने में मुझे याद है कि आप वो डेस्क कंप्यूटर ऑन करके ना जाके चाय शाय बनाते थे. वो सारा लोड हो रहा है विंडोज अभी. ब्रो गेम्स वगैरह खेलते थे यार. इस पे गेम्स खेलने के लिए आते थे वो लोड हो रहा. हाँ ठीक है शाम को खेलेंगे. अच्छा ब्रो ये मुझे बताओ कि अच्छा मैंने एक चीज वो है कि अगर आप प्रोड्यूस करते हो जब ट्रैक आपको लिखने की अप्रोच लाइक डिफरेंट हो जाती है. लेट्स से अगर मैं आपको एक बीट भेजता हूँ और आप कोई बीट सुनते हो और आपको वो बीट बड़ी पसंद आती है और आप उसके ऊपर कुछ लिखते हो एंड कंपैरिजन टू आपके पास कोई आइडिया आता है और आप उसके ऊपर सारा प्रोडक्ट बनाते हो. उसका राइटिंग प्रोसेस लाइक इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट है कि आप उसको लाइक स्केल किस तरह करते हो. लाइक जब आप खुद बनाते हो डू यू रियली गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल लाइक द म्यूजिकलिटी ऑफ इट इज व्हाट आई एम सेइंग.
मैंने कभी ना अपना वो सेट प्रोसीजर नहीं रखा सही। इसका ना, क्योंकि मुझे पता है सेट प्रोसीजर रखूंगा तो आई गेट स्टक इन फ्यू स्टेप्स. आई बिल्कुल वाज ठीक है। लाइक इट्स लाइक let it flow. कभी कभार मेरे पास I get the beat in my head beforehand. हम्म। Beat आ जाती है, कभी lyrics नहीं आएंगी उसकी. हम्म। कभी I get the lyrics and I'm like lyrics आ जाती है तो I can make the beat for it. It's like I know मैंने किस tempo पे लिखा है. I know the हम्म। feel that I'm going for. There usually an existing song playing in my head, and then उसी की beat पे if I don't have the beat I'm like I have that song in my head and then हम्म। I try to reference that. तो बहुत ज़्यादा कोई concept है जैसे मर्दाना paradox was like the हम्म। recent concept and I was like वो मैंने concept के ऊपर what I felt like I was like making a whole concept. I was making a whole audio movie for you guys. या So in that I was like कि यार इसको मैं जो feel मुझे आ रहा है वो feel मुझे उसमें डालना है. So I gave a lot of thought into it. लेकिन it just like जहाँ से जो चीज़ पहले आ जाए ठीक है सही। ना. If I have the beat already, अब writing process में मेरा ये है कि थोड़ा लिमिटेड हो जाता है क्योंकि you don't have the control over the beat. हम्म। I always prefer कि मेरे पास कंट्रोल हो कि अगर मुझे कुछ चेंज करना है, कहीं ब्रेक्स वगैरह हम्म। डालना है तो वो मेरे हाथ में हो. बिल्कुल लेकिन ठीक। अगर नहीं है तो भी इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ फन बिकॉज यू गेट डन इजीली. हम्म। लेकिन अगर आपके पास कंट्रोल ज्यादा होना तो यू डोंट गेट डन. यू जस्ट लाइक इधर भी कुछ कर दूं, उधर भी कुछ कर दूं, यहाँ पर हम्म। एक वो सिलेबल वहां पर ये कर दूं. परफेक्शनिस्ट उसका आपको हाँ मौका मिलता है उसको बनाने का अपने हाँ हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली. ब्रो एक आपकी वर्स जो है ना बोलना वाली, हाँ उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग लाइक फ्लो स्विचेस और केडेंसेस हैं बड़ी। और अगेन मैं बहुत सारे तेज तेज रैप सुनता हूँ लोगों को करते हुए ना। लाइक हाँ लोग ना बड़ी तेज तेज रैप करने की कोशिश करते हैं, बट जो एनंसिएशन है लफ्जों की, हाँ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत. आई थिंक लोग जबान लफ्ज खा जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि उनकी पॉकेट कौन सी है जिसके अंदर वो तेज रैप अच्छी तरह कर सकेंगे और लफ्ज अदा होंगे प्रॉपरली। आई थिंक जब Yeah, मैंने bro. फ्री स्टाइल रिलीज किया था और उसके बाद हमारी बात भी हुई थी, और आपने मुझे पहली बात ही यही की थी कि आपने जिस तरह वर्ड्स अनंसिएट किया ना, ये मुझे बड़ा पसंद हाँ आया। आई थिंक तो आई थिंक हाँ मेरा बड़ा फोकस होता है इस चीज पे ना कि मेरी वर्ड्स की अनंसिएशन क्या है। तो ये चीज आपको क्या लगता है कितनी इंपॉर्टेंट है आपके कंटेंट को लाइक लोगों तक उसकी इफेक्टिवली पहुंचाने के लिए कि आप अपना मैसेज डिलीवर करते हो? यार बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर वो वाला भी इतना इतना ज्यादा ओपन माइंडेड लिसनर नहीं बना है हिप हॉप का. बिल्कुल ठीक। सही है ना. अगर वेस्ट में देखो तो वेस्ट में nobody gives a shit about what हम्म। you're saying. Like बिल्कुल ठीक है। enunciation गई बाहर में. सही हाँ है. मम्बल रैप समझ ही कुछ नहीं आती, बंदे बोल क्या रहे हैं तो ब्रो Yeah, एनंसिएशन का। यंग था क्या बोल रहा है कुछ नहीं हाँ पता लेकिन ओहो क्या बात है. So यही सीन है। I mean I respect that. I love that. I या enjoy mumble rap a देयर इज अ lot. So म्यूजिकलिटी इन देयर। या डेफिनेटली। yeah, exactly. तो enunciation यहाँ पर अभी बहुत important है because listener हो रहा है थोड़ा mature and they want to hear what a person is saying. The reason why uh, Hashim Ishaq or Hashim Nawaz, Dar or Anjum or I would say Sunny, बिल्कुल ठीक है। these guys are made champion by their fans. They're loved by their fans because they have those lyrics to fans को याद है. जैसे सनी की वो जैसे एक लाइन है जो लोग बहुत ज्यादा कोट करते हैं कि काश मेरे अब्बा होते गले बिल्कुल लगाने के ठीक। लिए, वो बिल्कुल वाली लाइन. बिल्कुल बिल्कुल। हाशिम की जो है वो लाइन्स हमें याद होती हैं जैसे मूनलाइट सोनाटा वाली जिसके बार्स हैं ब्रो. क्या बात है। हाशिम इज अ फकिंग किलर. किलर ब्रो। मैं तो कहता हूँ पंच लाइन। बात यही है ना ब्रो, यही बात है। मैं ये कहता हूँ, मैं कई कई चीजें होती हैं जो उन लोगों पे छोड़ देनी चाहिए, ठीक है ना। या ब्रो. like या I left this like fun bit उस तरह का rap करना, I left it on you bro. I'm not gonna like try to compete in that space with you. Then it comes to like punchline space, या which like they get champions that space. Like he can या punch on every line, he can punch every line, या ब्रो. and it's gonna be a sick punchline. Even in my track he was like वो बेचती है मोची, वो मैं बोलूँ मैं चाहता कैन अ बोन समथिंग, मुझे याद नहीं आ रही एग्जैक्ट लाइन लेकिन like मोजी बोन पे इसने प्ले किया था. I'm like Wordplay. bitch you're I see what you did It's there. like यार गॉडफादर ये रिफ्यूज करेंगे ऑफर नहीं, अभी जो लास्ट इसका ट्रैक था। तो मैं Yeah वही bro. कह रहा हूँ कि like there are so many internal rhymings and wordplay and metaphors that he says. Yeah A lot of people probably don't get it. As a hip hop head, I yeah bro. like
आई सीक फॉर इट, मैं पूरा गाना इसलिए सुनता हूँ कि कब आएगी कब हाँ, आएगी. तो आई वो थिंक पता चलता है कि he's like उसने किया है वो he's studying the craft, या ये समझ में आता है, and he's studying the craft from the right he source. gives you a ठीक lot है. of credit as well, bro. He gives you a lot of Yeah. credit for his development, and obviously whenever obviously he's like my brother, you're my brother. Like whenever we personally spoke, he always gave a lot of credit to you as well, like to for his development as an artist. He definitely So bro, you don't realize you have a lot of I influence on don't, the scene, man. I'm telling you, you don't bro. realize, bro. You just don't. I'm telling you. मैं आज इसलिए ये बात हो रही है. मैं सिर्फ I'm just here to tell you. You have a Bro, I lot of. don't really get, I don't know, but मुझे देखो मुझे rap के बारे में बात करने में बड़ा मजा आता है, ठीक Hmm. है ना? Because there are not a lot of people who can talk to me about rap. Yeah. सही है. And you know, I don't live. My friends are not that much into hip hop that I can talk about. यार तूने सुना उसने क्या बोला? उसने बोला कि अबूरा M in your head now you Luigi brother. मैं क्या बोलूं? क्या मतलब तुम्हारा? तो Yeah. वैसे like, but I love to talk about. But seriously, it's a weird thing when somebody says, "Oh, you've done this." Yeah, Moji, ये जो तुमने किया ना. I'm like, okay, but I don't know how to respond. I'm just No, I a understand. fan. I understand. But you are one of those people, bro. So just keep that in your mind, man. Definitely. Like you deserve all the flowers, and I think इसमें बहुत सारी एक चीज है जो लाइक अगेन मैं कह रहा हूँ यही बात कह रहा हूँ लाइक लोग इस चीज को वो करते हैं सबकॉन्शियसली ना. आपको जो चीज एंटरटेन करती है ना ज्यादा आप उससे ज्यादा Yeah. इन्फ्लुएंस ले रहे होते हो. लाइक अगर मैं बहुत ही कोई हैवी ड्यूटी चीज बना दूं जो बहुत सारे लोगों को समझ ना आए. Mhm. आई डोंट नो मैन कितने को लोग इन्फ्लुएंस होंगे उससे. दैट्स अ वेरी लाइक इट्स अ वेरी मडी एरिया बेसिकली. लाइक यू कांट रियली से बट डेफिनेटली जब आप कोई इस तरह की चीज बनाते हो जो आई एवरीबडी कैन एंजॉय यू कैन Yeah. आप उसको बेस कर सकते हो कि इसका कोई इम्पैक्ट है. एंड आई थिंक ये जो वर्ड है ना इम्पैक्ट Uh-huh. it's bigger than anything in hip hop basically. Yeah. It is impact you, know. It's like it's all that makes you great. Hmm. So I mean, you can have the greatest song in the world, but if it doesn't have any impact, it's not gonna do anything. I mean, look at the impact Kanye has in the scene. Yeah. I mean, Dunda is not his best work, I would say, Mm-hmm. but the impact. Are we talking about Donda, bro? Oh no, no, bro. I would say, Oh. I mean, Ye fans, it's nice. Okay, you like it. ठीक है, सही है, लेकिन it's not the best Kanye. Yeah, I'm It's not a Ye fan. Like I'm an old like there is a time period in Ye's career that I'm fan of, but I cannot claim to be a Ye fan. yeah. So I agree with you basically. I हाँ. think before Jonah, जो Jonah track है, उससे पहले जितने भी track हैं, वो तो पहले hip hop fans के लिए है ही नहीं. Like हाँ. they're not even made for hip hop fans Yeah, bro. basically. And once that Jonah starts and then it goes down, 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 तीन चार tracks ऐसे आते हैं जो I really enjoyed. But Yeah. when you have 27 songs on an album, Yeah. and your USP and like you're famous for pushing the envelope in hip hop culture, Mhm. and I being a hip hop head only enjoy four songs out of 27, bro. I don't Well, know. that's a bad thing, Yeah. bro. You remember back in the days? बहुत कितना बुढ़ा sound करना back in the days बोल कोई के. कोई कोई बड़ी Bro. बात नहीं है. मैं बुढ़ा इंसान हूँ, bro. Come on. Bro, back in the days, bro. इतना भी back नहीं बोलूँगा, electronic 2001. Yeah. सही है. Bro, is there any track that you can like skip or you No. get bored of? Bro, her track is like एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक. Marshall Bro, Mathers LB2. Bro, albums होती यही थी. मैं यही बात कह रहा हूँ. Like that was the whole thing about album. Like ये एक Yeah, bro. project है और ये इस तरह की चीज है कि आप ये पूरा project सुन लोगे. Like मुझे याद है Bro. जब cassettes का time होता था, bro. तो एक हाँ. जो साइड होती थी उसके ऊपर पूरी एक आप उसको या तो ग्रर करके फॉरवर्ड करते रहो आगे. हाँ. तो आपको हाँ. नॉर्मली पूरी साइड सुननी पड़ती थी 6 गानों की. ठीक है ना. Yeah, bro. और फिर दूसरी साइड पे था. तो आई थिंक ब्रो एक इकबाल से मेरी रिसेंटली बात हुई जब हमारे इकबाल के साथ सेशन हुआ तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की. उसने कहा लोगों का अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया आजकल. बहुत.
तो बहुत एक one of the reasons that you don't see, like मैं उससे कह रहा था, let's go to a question first, bro. You are one of the people who actually focus on making projects, ठीक है ना? आप हाँ albums बनाते हो, tapes बनाते हो, आप actually discography create कर रहे हो अपनी, yeah instead of like you put single. I know you put singles out as well, और वो सब ठीक है अपनी जगह, but you mm, actually work on a like a portfolio, like, oh, I have this many projects. yeah For some reason I think a lot of people are missing on that, like लोग कहते हैं सिंगल बनाए क्योंकि maybe it's easier, faster, whatever is the reason. commercialized stuff I mean Commercialized as well, yeah, और फिर वो आप ट्रेंड फॉलो कर सकते हो जो भी रिसेंट चल रहा होता है and all that. yeah bro How important for you is to like to keep making like projects, or for your career it was, how important it was to do that? bro is a counter question ठीक. आप एज अ हिप हॉप आर्टिस्ट यू वांट टू स्टडी समवन ठीक है एक होता है ना स्टडी टाइम होता है आपका आपने बोला यार अब मैं जेजी स्टडी करूंगा यू नेवर हर्ड ऑफ जेजी यू उठते उठते बैठते सुना है Mm-hmm. व्हाट डू you hear his singles or do you pick his albums Bro, I would never go for singles. I just pick an album. I'll see his you catalog in there. bro you start from the first album suni sahi hai ye aisa tha second album suni अच्छा फिर ऐसा हुआ you follow a Blueprint पे story गए, हाँ, of course, yeah, yeah. हाँ ठीक है आप एमिनेम उठाते हो आप इन्फिनिट थोड़ा सा सुनते हो फिर आप Hmm. स्लिम शेडी सुनते हो फिर आप मार्टिन मैथस LP पे वहाँ चले गए. Hmm. ये करते हो फिर आप उसको उठाते हो जे कोल को ब्रो एल्बम्स डिफाइन एन आर्टिस्ट There you go. आप रॉक उठा लो ठीक है Hmm. ना आप वो उठा लो क्या नाम है इवन आप ईडीएम थोड़ा उठा लो हाँ, कोई आपको पॉप आर्टिस्ट की उठा लो ब्रो, कुछ भी उठा लो. या ब्रो Yeah. इट्स लाइक एन एपिसोड फ्रॉम एन आर्टिस्ट सही है ना Hmm. वो एक सीजन है आर्टिस्ट का वो That's a दिखाता है कि beautiful word for it, bro. Nice. एक Yeah. सीजन है कि ये चल क्या रहा है लाइफ में उसके अब वो किस क्रॉस रोड्स पे है उसके Hmm. क्या माइंडसेट कितना स्किलफुल हो गया है अभी ऐसे लगता है एल्बम्स आर लाइक अ बंच ऑफ यू नो मे बी हिट सॉन्ग्स Hmm. कि यार ये हिट हो सकता है इसके बाद ये ब्रो पहले पूरी पूरी स्टोरीज होती थी इसके अंदर Exactly. और continuation of thought भी होती थी कि अच्छा, कंटिन्यूएशन थॉट होती थी ये चीज मैं मिस करता हूँ, लाइक विच आप करते हो अभी भी. दैट्स व्हाट आई वाज हाँ ट्राइंग टू से. सनी भी कर रहा है, इवन नाउ हाँ सनी इज डूइंग दैट. एंड ब्रो, आई लव इट. लाइक मैं यही कह रहा था, ये चीज है जो आपकी पर्सनल मोटिवेशन है ना. ये इस तरह की हाँ चीज नहीं है कि आपके फैंस आपको पुश करते हैं कि यार एल्बम्स बनाओ. ये आई डोंट हाँ थिंक इज दैट, am I right in saying that? bro देखो albums I loved hearing albums so yeah that's why I wanted to make one of my own Mm-hmm. basically that's what it is Mm-hmm. मैं वैसे भी सिंगल निकाल रहा था लेकिन when I came to an album and I was like कि यार एक you know एक thought हो एक पूरा एक mood बना हुआ हो मेरा आज का ना Mm-hmm. एक पूरा पूरा उसका एक पैलेट चल रहा हो एक पूरा थीम चल रहा हो बंदा ऊपर से नीचे जा रहा है या गिर रहा है बंदा या Uh-huh. फ्लोट कर रहा है Bro, that is a it's like that beautiful. It's a beautiful project, man. Come on. bro इसलिए it starts with like a very lighter tone from Abda Parveen and then it ends at like the worst possible place to Young Bone ठीक है ना just like ऊपर से नीचे जा रहा है it's like something like that मैं इस तरह कुछ बनाने वाला था Hmm. तो ये मेरा माइंड था एंड उसी को रख पे एंड इसके लिए मुझे सनी ने भी हेल्प की बिकॉज ही वाज एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसिंग इट तो मैं उसको सुनाता एंड उसको बताता क्योंकि you often get lost when you're making something. Definitely, you need Focus more gets ears lost. than you know. You need more ears than your own, bro. Definitely. हाँ and you get influenced कि आप अभी सुन रहे हो आपने मतलब काम किया आपने सुबह कोई आपने केंड्रिक का गाना सुनिया एंड लाइक ओ मुझे ये करना है तो पूरी वो एक वन थॉट Hmm. का जो है ना वो ऑफ हो जाता है यू नीड एन ईयर एंड सनी हेल्प मी अ लॉट इन दैट Definitely. and yeah it was one of my dreams to make an album and I did it I don't know how I did it क्योंकि अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ it's not happening right now लेकिन it's like It's hard, very bro. it's very I'm hard थोड़ा बहुत मैं भी काम करता रहता हूँ. It's hard. I can understand. It's really hard to yeah put a project together, and like the type of project that you normally do. I think mm. it's quite hard. Obviously, हम लोग और भी जिंदगी में काम करते हैं तो I yeah think bro to do a project like that you have to be in the studio for like a whole month maybe, and just like yeah keep focusing, like सो भी आप स्टूडियो में आप like उसी हाँ एक
उसी माइंडसेट में रहो, सो आप उस कॉन्टिन्यूटी के साथ एक एल्बम अपनी रिकॉर्ड करके साइड पे मार सकते हो। आई थिंक दैट्स द I didn't even know किस तरह album बनी है. सही हम्म है ना? It was made within a span of 10 days. नो वे ब्रो, 10 Yeah, days bro. 10 days. It was like the first lockdown, ठीक है? And I was like in a very uh, bad place emotionally. sure And I was like, either I'm gonna make this album or I'm gonna just throw it away, throw all of this music shit away. I hmm don't want to do this. So yeah, and I was like, I prayed, yeah, if you want me to do this, like I prayed to the big man about, if you want me to do this, let's celebrate the album on the Eid. If you don't want me to do this, then we'll celebrate our retirement. yeah. I think I saw And one of your posts around that time. You put something on Facebook as well, saying that yeah, you might not do the music anymore or something like that. I think. yeah, it keeps on happening. But that's like a personal Yeah, stuff yeah, of that's course. going on, personal battles and shit. You know how life is. So ये हुआ था, and I was like, I didn't write anything. ठीक है ना? hmm I didn't make any music for a long time because hmm you're in that mind state. And Yeah. मैंने I prayed this and I started. ठीक है ना? Within 10 days, I had 15 songs. Wow. And I was like, सुबह You're beat like बनाई. madman, bro. Come on. Yeah, and I was working. I was doing my job as well. ठीक है? Crazy. I was writing. उसी वक्त बीट बनाई, उसी वक्त रिकॉर्ड किया, सनी को सुनाया, उसने बोला ये आज सही है, अगले पे आ गया, अगले दिन सुनाया, तीसरे दिन सुनाया, दो दो एक साथ किए. Wow, It's man. like it was crazy how it went. It was like unrealistic. I can't Zero believe to I did 100, that. bro. That went 0 to 100, didn't it? Wow. Yeah. That is crazy, man. मैंने कहा कोई साल काम किया होगा इस एल्बम को निकालने से पहले. Nah, bro. Nah, it's like Wow. a 1 week or so. 2 week हुए होंगे. Baki, like recordings I did like in 10 days. Yeah, You yeah. keep polishing and all, Of course. mixing and mastering. So That the thing was like, basic, you saying the सांचा बना लिया था basic 10 दिनों में, फिर उसको हाँ, polish बना करता रहता बाद में. हाँ. Beautiful. तो 10 दिनों में ये हो गया था. And then उसमें से 15 बनाए थे ट्रैक्स, जिसमें से 9 मैंने चूज किए थे. तो इनमें से उनको और ज्यादा सुधारा, mixing and mastering and polishing and placing them and all. तो ये सीन था. ब्रो, आपके म्यूजिक की प्रेजेंटेशन पे आप कितना फोकस करते हो इन टर्म्स ऑफ लाइक ओके ये इसकी म्यूजिकलिटी है, ये इसके लिरिक्स है, ये आप अपने विजुअल को दिमाग में रख के लाइक पूरे ट्रैक को वो करते हो, या obviously it works both Mm. ways, sometimes you have visual and you come up with the track, how does that work for you? Bro, I'm really weak in visuals, I would say. Mm-hmm. जो मैं visual चाहता हूँ ना माइंड में, सही है, I never like pull it off to 100. Music में I can say I can pull it off to a 98 or 95, but visuals में I never go for it because I know I could, I wouldn't be hitting that mark, and then it will hit, it would kill, it would hurt the perfectionist in me. Oh, so you are perfectionist. I wanted to ask Kinda, I that. would Kind say. of, yeah, okay. ऑडियो में ऑडियो में अगर मुझे स्नेयर पसंद नहीं आ रहा तो वो स्नेयर डिलीट हो रहा है. Mm-hmm. तो So yeah. इट्स लाइक दैट. एंड बेसिकली ये कि I have this kind of mood in my mind, a scenario created जिसके अराउंड में वो बनाता हूँ पूरा म्यूजिक. So yeah. I know जिस तरह का वो सिनेरियो होता है उसके लिए मेरे पास बजट नहीं होगा. Mm-hmm. अगर बजट हो जाए तो वो you would get blown away कि इतना खतरनाक दिमाग में सोचा होता है उस पे विजुअल्स. But I try to make it as presentable as possible, as Now, bro, nice some of as your visuals are crazy, man. What are you bro. talking about, bro? Come It on. it is. But I think it's, you do good within your resources, man. Come on, that's you what I kill try. it. You Bro. kill it, bro. You kill it. That's what I try, bro. But yeah, nah. I think if yeah, I think hello, भाई कोई sponsor है ना अगर भाई hello Yeah, कराओ इधर. bro. Hello हाँ, कराओ यार. hello कराओ जल्दी मोजी जल्दी को, क्या कर रहे हो भाई? से. तो सीजन फुल बनाएंगे ना, नेटफ्लिक्स वाले शिट करेंगे. उसका नाम रखते हैं देसी हिप हॉप में मौज. Oh, could be that, or could be just normal, oh, एक पेपर पे बना लेंगे रैप. एक पेपर की कहानी. मैं कहता हूँ हैमिल्टन की तरह ना बनाए ब्रो कुछ.
Hammer पाकिस्तान की Bandi. हिस्ट्री पे वो एक वो है थिएटर लाइक इट्स लाइक अ स्टेज शो बट दे ऑल रैप Oh, टू ईच अदर बेसिकली oh, it's on American history bro, and that. Yeah. It's that crazy. would be really nice. Yeah, you should That would watch be Hamilton, really bro. You are the guy to watch it, bro. You're the man. You should watch it and get like some ideas out of it. nice. I'll try. But बस ये है कि बस बाहर काली भी करो खड़ी हो बाकी खैर है. नहीं नहीं But हम नहीं नहीं वो वाला सीन नहीं है हम अल्लाह माफ करे अच्छा. हमारे हम सारे अपने लीडरों को सलाम करते हैं ब्रो क्या हो गया है सलाम bro. हम वो नमस्ते सलाम सब कुछ bro. हाँ, हम वो रिबेलियस लोग थोड़ी हैं हम मौजी हैं ब्रो क्या हो गया तो ये थे मौजी और आज की बैठक के लिए इतना ही मिलेंगे अगली बैठक में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें शुक्रिया भी करो जो चीज आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है ना उसमें मतलब उससे थोड़ा सा दूर रहो. मैं बंदा कूल जैसे कुकम्बर तू बंदा फूल तू तेरे अंदर ओपन माइंड अबाउट म्यूजिक रखना होता है चाहे वो रॉक सुन रहे हो ग्रंज सुन रहे हो मेटल हो आपका फंक हो या